There are two kinds of people in this world. First, who know how to use their credit card in a smart way and reap its benefits. Second, people who do not use their credit cards wisely and end up being in a lot of debt. Today in this video, in the next few minutes, I'm going to be telling you the pros and cons of credit cards. And at the end of the video, I'm going to be giving you a few tips on how you can use your credit card in the right way. But before I proceed, if you enjoy my work, make sure you support me by hitting that like button and share this video with your friends. Okay, let's start with the negatives first. Credit card आपको बहुत ज़्यादा debt में डाल सकता है. Banks आपको एक certain amount of पैसा देते हैं और बोलते हैं ये आपका पैसा है और roughly 50 दिनों तक आपको इस पर interest नहीं लगेगा. Now that's great. Problem तब होती है when they start charging you interest on it. And what banks do is, if you owe 50,000 rupees on your credit card, banks आपको पूरा पैसा भरने नहीं बोलते. वो आपको बोलेंगे प्लीज मिनिमम बैलेंस भर दीजिए और आपको लेट पेमेंट फी नहीं लगेगा. Now this is a great psychological trick. आप सोचते होंगे वाओ इट्स ग्रेट, मुझे तो बस मिनिमम अमाउंट भरना है, बट इट्स नॉट, बिकॉज आपको उस पर इंटरेस्ट भरना पड़ेगा. एक और प्रॉब्लम ये है दैट अ लॉट ऑफ पीपल डू नॉट रियली अंडरस्टैंड बिलिंग साइकिल्स और इवन टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ देयर क्रेडिट कार्ड. लोग क्रेडिट कार्ड को डेबिट कार्ड की तरह यूज करते हैं, एटीएम से पैसे निकाल लेते हैं विदाउट इवन रियलाइजिंग दैट उस पर उन्हें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भरना पड़ेगा. सपोज आपने अपने 50 डे पीरियड में क्रेडिट कार्ड में पैसे नहीं डाले एंड यू फॉरगेट टू पे द मिनिमम अमाउंट ड्यू. अब आपको लेट पेमेंट फी, उस पे टैक्सेस और इंटरेस्ट सब भरना पड़ेगा. देन यू गेट इनटू दिस रियली बैड डेट साइकिल जहां आप बस मिनिमम अमाउंट भरते हो एवरी सिंगल मंथ. इन योर माइंड आप सोचते हो कि हाँ मैं क्रेडिट कार्ड में पैसे डाल रहा हूं, बट इन रियलिटी आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, जिसकी वजह से जब आप आपका क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट चेक करोगे आप रियलाइज करोगे कि आपने इसमें कुछ पैसे भरे ही नहीं एंड यू आर फार अवे फ्रॉम क्लोजिंग ऑफ योर क्रेडिट कार्ड डेट. There are also some other negatives attached with credit cards. If you are someone who has a credit card or has had a credit card in the past, आपने कभी ना कभी ऐसी कोई चीज खरीदी होगी जिसकी आपको जरूरत नहीं थी. And that's the problem with carrying credit cards. It leads to a lot of impulse buying. Banks इस पर ही capitalize करते हैं and charge you really high interest rate. The interest rate on credit cards in India is between 20 to 30% and sometimes even higher. The biggest disadvantage of having a credit card is that वो आपको debt में तो डालता ही है, but on top of that, if you don't pay money on your card on time, वो आपकी credit rating को खराब कर सकता है. अगर आपको फ्यूचर में घर, गाड़ी या एनी टाइप ऑफ लोन चाहिए, बैंक्स आपका सिबिल स्कोर चेक करेंगे. क्रेडिट स्कोर डिपेंड करता है ऑन योर कैपेबिलिटी टू हैव अ डेट एंड टू पे टुवर्ड्स योर डेट ऑन टाइम. But there are also a few advantages of having a credit card if you use it wisely. जहां एक तरफ क्रेडिट कार्ड्स आपकी क्रेडिट रेटिंग को खराब कर सकते हैं, दूसरी तरफ क्रेडिट कार्ड्स आपकी क्रेडिट रेटिंग को सुधार भी सकते हैं. एक एग्जांपल देता हूं. आपने क्रेडिट कार्ड कभी यूज नहीं किया, ना कभी अप्लाई किया है, यू ओनली यूज द मनी दैट यू अर्न. On the other hand, I have a credit card which I use regularly for regular expenses and by the end of the month, I pay it off. अब even though I'm technically in debt, my credit score would be better than yours. आपकी credit score same रहेगी, whereas my credit score will keep on building over the years. Having a good credit score is very important when you go for a home loan, education loan or any other type of loans. क्योंकि एक हाई क्रेडिट स्कोर ये इंडिकेट करता है कि आप डेट मैनेज कर सकते हो और अगर आप लोन लोगे तो आप उसको टाइम पे रीपे कर सकते हो. क्रेडिट कार्ड के और भी बेनिफिट्स है. यू गेट पॉइंट्स ऑन योर परचेसेस, आपको फ्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलता है व्हेन यू ट्रैवल ओवरसीज एंड इन सम केसेस यू आल्सो गेट ट्रैवल इंश्योरेंस बेनिफिट्स. बट द बिगेस्ट अपसाइड इज दैट इट बिल्ड्स योर क्रेडिट स्कोर. Also with credit cards, customers are usually protected with fraud protection policies in place. मतलब अगर आपके अकाउंट में फ्रॉड होता है या कोई आपके पैसे चुरा लेता है, the bank will repay the lost money. Now I'm going to be giving you a few tips on how you can use your credit card wisely and for your own benefit. First, use your credit card like you would use your cash. ये समझना बहुत जरूरी है that credit card के जो पैसे हैं वो आपके नहीं है, वो बैंक के हैं. So use it wisely, use it like you would use your cash and do not spend on things you don't really need. क्रेडिट कार्ड को आपको बस एक टूल समझना है which you can use to build your credit score. Second point is never pay interest. Never ever pay interest on your credit card. Always remember that the minimum balance is a trap. अगर आपने 10,000 रुपए खर्चा किए on your credit card, by the end of the month you have to pay it back in full. You should never be paying interest on it. So only spend the money that you can pay back by the end of the month. The next point is avoid any fees or charges. If there is a situation where you can't pay money to your credit card in full, at least pay the minimum amount. Never incur any form of late payment fees. बहुत सारे credit cards also come up with different type of offers. जहां अगर आप अपने कार्ड पे एक certain amount खर्चा करोगे, they will waive off your annual fees, and you need to make sure you do that. क्यों पैसा देना है बैंक को फ्री में? The final point is rewards. If your credit card is giving you rewards points, make sure you use the reward point system. Over the years, when you use your credit card for your daily expenses and pay it off in full by the end of the month, it will not only increase your credit score, but it'll also earn you a lot of rewards points. With these reward points, आप सामान, vouchers, gifts, travel benefits, even travel tickets भी afford कर सकते हो.
End of the day, remember that credit card एक बैंक का प्रोडक्ट है. It is neither good or bad. How is your relationship with your money? That is what you need to be asking yourself. And that is what determines whether credit card is good or bad for you. और अगर आप इसको थोड़ा स्मार्टली यूज करो, ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है फॉर एनी इमरजेंसी एक्सपेंसेस एंड ऑल्सो टू बिल्ड योर क्रेडिट स्कोर. वेल, आज के लिए बस इतना ही. इफ यू लाइक माई वीडियो, ड्रॉप अ कमेंट बिलो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. आई विल सी यू नेक्स्ट वीक विद अनदर वीडियो. तब तक के लिए टाटा बाय बाय.